Today's agenda will have is relationship between two entities. So in SQL we had one to one, one to many, many to many. We can try to implement that in Spring Boot also. So I've made a documentation, a roadmap. We'll follow that. Okay, so we'll have one to one first. Okay, so one state has one chief minister. One state has one chief minister. So if I want to show one to one, how do we show that? This is my state table having, let's say, three columns: state number, state name, and capital city. And this is my chief minister table having chief minister number, chief minister name, okay, state number, state name, and capital city of that state. And here I have CM number, CM age, okay, CM age, CM gender, blah blah blah. If you want to add, you can add as many columns, entities. So this is CM, gender, okay. Now, if I want to establish a one-to-one relationship, okay, what are the primary keys over here? Individual primary keys. So primary key of this is this, and primary key of this is. Now in one-to-one, I have two options. Either I can make an entity and bring the foreign primary key of the left table and make it as a foreign key in the right table. This also I have. So now here the CM number has become foreign key, right? This provision is also there. So here, who is the owner entity? State is the owner entity. Who is owning the foreign key? State. So this is called as the owner entity. And this is which table? Chief. So this also is possible, and this also is possible. That you can make any one of as your owner entity. What happened over here now? State's primary key goes and becomes a foreign key in the chief minister, right? So either of the options are on. Either of the options are on. Either of the options are on over here. So in this case, who is the owner entity? So in the blue, who is the owner entity? And in this purple, who is the owner entity? So how do you all want to implement it? Normally, the smaller should go to the bigger. So state and chief minister, who is small? Chief minister should go to the state. So I guess we'll go with plan A. So we'll try to implement which. So we'll make who as the owner entity. So in whichever entity you write at the rate join column at the rate that in one, this is in one to one, this is in one to one I'm talking about. In one to one, wherever you write join column, there the foreign key will come. There the, so where do you want the foreign key? In which, where do you want the foreign key? In state or in chief minister? We are following the blue pattern. We will not follow this. So I'll remove it from the equation. That doesn't disturb us.
So where do you want the foreign key? In which entity? State or chief minister? State. So state will be the owner entity. So will be the owner entity, and in one to one the owner entity has at the rate join column means the foreign key comes over there. Okay. So let's try to design a simple entity then. So I go to the entity class, right click, new, make a new class by what name? State. And now what attribute do I need to add? Private integer, state number, private string, state. Okay, so I'll just say as name and private string capital. So if I write capital city like this, how will it make the table? How will it make the column? It will make capital, and where there is a capital letter, it will put a underscore like this. It will convert it to underscore. So you want the name like this, you want it as it is. Okay. So if you want it as it is, then you can put a at the rate column saying I want the column name as capital city but with a small. Okay. You don't want the underscore, you have to give a small over here, else again it will work like this. Okay. Now whatever we had for our previous entity, let's take that. Okay. So aren't we using Lombok for you guys? We're using, right? So we can use at the rate entity at the rate at the rate. Okay, use all of them. Do a control shift O. Entity from persistence, setter, getter, builder. Okay. Simple. Okay. Now let's make the chief Krista class also. So I'll make the name as. So what will be, how will the table be made now? Chief underscore minister. Okay. So what all do we think to pass over here? Integer, CM number, private string, CM name, private int, CM age, and private string CM gender. Okay. So here let's come and add all these annotations. I also want to add the table annotation so that I don't want the underscore in the table name. So I'll give what? Mr. with all, both small, both the small. Okay. Okay. And then we will give the add ID attribute, and here also I don't want any capital, so I'll give it at the rate column and saying name equals to keep it same, keep it same. So this much you guys can do, right? Okay, all good. Okay, so far so good. Okay,
Now, which is the owner entity where you want to do the relationship? Huh? State. So you will add 1 to 1 where? 1 to 1, you will add where? In the state. Okay, so here we have cascade type and fetch type. Cascade means if I 10 cycles are standing in a cycle stand, I push the first cycle. What happens to the 10th cycle? That also falls down. So it is a cascading effect. So if I delete a state, that chief minister will also be deleted because called as cascading effect. So if the state number was 1 of Maharashtra, so what will show against Shinde state number 1? If I update the state of Maharashtra to 2, so if I change over here, it will reflect over there. It is called as what? Cascade type. And what is the next is fetch type. Fetch type means when I do a query and I fetch only the states, it will not fetch the corresponding chief minister record. That is called fetch type lazy. Fetch type lazy. And when I use fetch type eager, it will fetch the child record simultaneously when it fetches the parent record. If I query the owner entity and I say fetch type eager, means of that parent entity get all the child data also. And if I do fetch type lazy, only gets the parent entity, will hold the child records later on until we use it. Remember what load would do? Lazy loading, something. Okay, so here, as you go in the bracket, you control space bar. First give cascade. You again control space bar. Okay, so here you can use what cascade type. Okay, so here see, okay, 1 to 1 cascade equals to cascade type all. So as you come over here, it should show you cascade. Okay, 1 to 1 from persistence imported, right? Bracket cascade. Why is it not giving me? This should come by default. Okay, the capital C. This should come by default. Cascade. Okay, on which element are we giving this? Okay, so first let's create the element. So what column do you want over here? CM number, right? So that will be of which entity? So state will have a chief minister, okay? So I'll call it as CM number. On this, we will give at the rate 1 to 1, okay? Control space bar, cascade type, control space bar, give cascade type all, give cascade type all, give a comma, control, fetch type, and which fetch type is your eager, let's do eager. Done? Okay. And then here you also now join column, right? So this is the owner entity, right? So this will give the, so where do you want the foreign key? In the state or in the chief minister? So that will become the owner in 1 to 1. The foreign key is with the foreign key is with the owner entity. So join column, okay. So now here, what is the name of the column which we are referring? Okay, so it's called like this. Okay, yes. So I will call it as number and serial number. Okay, so when I say join column and that column which will become the foreign key, what name do you want to give to that column? Okay, so the first attribute name, as you go inside, hit control space bar. Don't need to buy at anything. Control space bar, take which column?
What do you want the name of the foreign key over here? If I had kept it my CM number, then what is the foreign key name? So give that. Okay. And comma, control space bar, reference column. In this chief minister table, which primary key is it referencing? Which primary key is it referencing? You have to pick that one. As simple as that. Make sense? And here you have to make an object of that non-owner entity. This is the owner entity. This is the non-owner entity. You can make any attribute name over here because as it is, we have changed the column name. But setter getter will be applied on this. Setter getter will be applied on this. So give a valid name. Okay. So state dot chief minister, because I have done setter getter. Setter getter will be applied on this variable. Okay. So how many columns will be there in the state table now? 1, 2, 3, and 4. What will be that column name? And where is it referencing from? Same number of which? Got it? Okay. Now let's go to the, in the non-owner entity, don't do anything. In the non-owner entity, do not do anything. As simple as that. Just do a save. Everything is good. I've added dev tools. It should rerun the application. As it run the application, it should ideally rerun the application. IT, चलो, तो उसको रन कर लेते हैं. Run as Java application. So what is your database name? ITP1 SBDB. ITP1 SBDB. हाँ, क्या अपडेट? अपडेट ऑल्ट. हाँ कर दे. तो क्या है तुम लोग का? ITP1 SBDB. ITP1 SBDB. चार टेबल बन गए. इसमें 4 टेबल कौन से हैं? पहला स्टेट बनेगा. स्टेट क्या है? दिख रहा है? सेम नंबर, कैपिटल सिटी, एस नेम, सब स्मॉल के अंदर भी आ गए. और माई सेम नंबर बन गया. और चीफ मिनिस्टर में सिंपल आ गए सिर्फ ये. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट into the what? State table. So as I insert into state, as I have given cascade type, so state will insert the chief minister also, because state के पास क्या है? स्टेट के पास चीफ मिनिस्टर है ना. स्टेट के पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? चीफ मिनिस्टर का ऑब्जेक्ट भी है, तो वो भी हम लोग साथ में इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. So let's go. Where are you all? ITP batch 1. Okay. So let me make a new entity. Add request. And what are we going to add? फोल्डर बना दिया क्या मैंने? कौन सा है अपना? तुम्हारा यही है ना? 8085. वो तो कुछ बनाया नहीं आपने. कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ना फिर. अभी हर एंटिटी क्या बनता है? न्यू क्लास. कौन सा?
state controller at the rate rest controller and at the rate post mapping add state public state public state and as a request body I'll send the entire what will we do now we also need the class state service not at the rate service we also need the new interface state repository does what extend state AR ये क्या है प्राइमरी की उसको टीचर है एट द रेट रिपोजिटरी इसको कॉपी करो और स्टेट सर्विस में ऑटो वायर करो और इसको कॉपी करो स्टेट कंट्रोलर में जाके ऑटो वायर करो मेरे स्टेट्स है ना ये बहुत सारे स्टेट है दिख रहा है थर्ड के स्टेट है और अब ये स्टेट सर्विस को लो डॉट यही फंक्शन लिख दो क्या कर दो रिटर्न कर दो ठीक है ये फंक्शन है कि हमारे पास क्रिएट कर लो ये क्या करेगा स्टेट रिपोजिटरी का फंक्शन करेगा सेव और क्या पास कर देगा उसको क्या हो गया भाई स्टेट इंटीजर नहीं है ओके तो अभी हम लोग आ गए थे स्टेट सर्विस में ठीक है ऑल गुड नाउ वी कैन गो एंड हिट द एंड पॉइंट एड स्टेट ठीक है तो 8085 या दोबारा एंड पॉइंट हाँ भाई 80 है ना 8085 है ना एड स्टेट अभी रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी पड़ेगी तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया किसका स्टेट का ये तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है क्या चाहिए मुझे एस नेम चाहिए दूसरा क्या चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये फॉलो करेंगे हाँ ऑब्जेक्ट में जो जावा में लिखा है वही फॉलो करना है
ओके ठीक है, ऑटो, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्लस एक स्टेट को क्या है, एक ये एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर अभी तीसरा की क्या होगा, चीफ मिनिस्टर की होगा, और वो क्या है फिर, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको हमको लाना पड़ेगा, यहाँ से की लाने पड़ेंगे सारे, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, सीएम नेम कर देते हैं, और does anyone know his exact age? 50 and ओके, तो ऐसे जब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो वहाँ भी इंसर्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र डिलीट करूँगा तो शिंदे डिलीट हो जाएगा, महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी चेंज करूँगा तो शिंदे का कैपिटल सिटी चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या कैस्केड टाइप, ठीक है, सेंड करते हैं और देखते हैं, देखो इंसर्ट हो गया, महाराष्ट्र को भी स्टेट नंबर मिल गया और शिंदे को भी सीएम नंबर मिल गया, डेटाबेस में आके चेक कर लो, तो स्टेट में भी एक एंट्री आ गई और चीफ मिनिस्टर में भी एक एंट्री आ गई, सही है, मैं वापस एक इंसर्ट करता हूँ तो ठीक है, I do a send, it adds in both of them, state also gets populated and the chief minister also gets populated, making sense? So and we have given one state will have, we have given one state will have one chief minister, so ये column will be duplicated or what? No, so you can give a unique on this column then, ये जो हमने यहाँ बनाया है स्टेट में, इसको हम क्या दे सकते हैं फिर, एक यूनिक, यूनिक हमने यहाँ से सीखा होगा कैसे देते हैं, एट कॉलम है ना, 75 है ना, एट कॉलम यूनिक इक्वल्स टू ट्रू, किसको, चीफ स्टेट के जाके चीफ मिनिस्टर, ये दो कोई अपडेट ना कर दे गलती से, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, ये इशू क्रिएट कर रहा है क्या, एरर क्रिएटिंग एंटिटी मैनेजर मेथड फेल्ड, कॉलम नॉट अलाउड ऑन वन, ओके 1 to 1 पे अलाउड नहीं करता है वो, तो 1 to 1 पे वो कॉलम्स अलाउ नहीं करता है, तो लेट्स आस्क चैट जीपीटी एज टू हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है, बिहाइंड द सीन अपने आप ही कर लेगी, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर रहे और रन कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉरेन की किसके आता है भाई, 1 to 1 में ओनर एंटिटी के पास, 1 to many में इसका उल्टा है, मैं इसके लिए बार बार स्ट्रेस कर रहा था इसके ऊपर, 1 to many में उल्टा है, फॉरेन की कहाँ जाता है, नॉन ओनर के पास, किसके पास, चाइल्ड के पास, ठीक है, तो अभी अगर हम करते हैं बुक और लाइब्रेरी, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, तो समझ में आ गया ना, तो बुक और लाइब्रेरी, तो क्या है, 1 to many किसका होगा, तो अगर लाइब्रेरी एक एंटिटी है और बुक एक एंटिटी है, तो 1 to many कहाँ होगा, वन लाइब्रेरी मैनी बुक, पेरेंट कौन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओनर एंटिटी कौन सी हो गई, ओनर एंटिटी ये हो गई, नॉन ओनर ये हो गई, यहाँ पर हम लोग जॉइन कॉलम लिखेंगे इधर ही,
बट कॉलम ऐड इधर होगा। जॉइन कॉलम लिखते हैं अपन ओनर एंटिटी के अंदर ही है, बट फॉरेन की बनता किधर है वो? फॉरेन का बनेगा अभी नॉन ओनर पे बनेगा। लिखना किधर है अपने को? जॉइन कॉलम लिखना किधर है? लिखना इधर ही है, बट बनेगा किधर वो? नॉन ओनर में। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू मेक इट। तो जल्दी जल्दी मैंने कुछ बनाया है तुम लोग के डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ये बनाया, और ये पेलोड भी हम डाल देते हैं डॉक्यूमेंट में, ताकि जो रेफर करेगा उसको मिल जाएगा। पोस्टमैन पेलोड, जो हम भेजते हैं ना रिक्वेस्ट बॉडी, उसको पेलोड बोलते हैं। तो पोस्टमैन का पेलोड भी मैंने यहाँ बना दिया। In one-to-one relationship, the foreign key is created in the owner entity, which is the entity where the relationship is defined with the owner entity। किसको बोलते हैं? जिसके पास एट द रेट जॉइन कॉलम है। एट द जॉइन कॉलम किसके पास है? वो ओनर एंटिटी, और फॉरेन की भी उधर ही बनेगा। वन टू मैनी का यही डिफरेंस है, बाकी सब कोड पूरा सेम है, कोड पूरा सेम है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ले लिया, तो क्या बनेगा वो? वन टू मैनी द फॉरेन की इज क्रिएटेड इन द ओनर पे लिखना है अपने को। ओनर एंटिटी कौन सी हो गई? जिसमें लिखा हुआ है जॉइन कॉलम, वो ओनर एंटिटी हो गई, बट फॉरेन की बन का रहा है नॉन ओनर। ठीक है, चलो ये दो एंटिटी बना लेते हैं, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे? एंटिटी में गया, एक नई क्लास बनाई, क्या नाम से? डिपार्टमेंट। देखो मेरे पास एक कोड है अभी, डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे क्या किया है। इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या किया है इसमें? इधर गया ये, हाँ, क्या क्या लिया है? कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, सारा आ गया। परसिस्टेंस से कैस्केड, लिस्ट से यूटिल, आईडी से बाकी सब भी। एम्प्लॉय क्लास बनानी बाकी है। ठीक है, तो डी नंबर, डी नेम, सिटी, वन टू मैनी, कैस्केड टाइप ऑल। ओके, अब ये बन गया, एम्प्लॉय क्लास बनानी है। उसका कोड भी यहाँ लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं उसके अंदर। ठीक है, जो हमारी बनती आई है जमाने से। और क्या कर दिया इसको? ये सारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया आईडी से। ठीक है, ई नंबर, यहाँ पे कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। कहाँ आ गए? डिपार्टमेंट, यहाँ आ गए। ओनर एंटिटी कौन सी है? डिपार्टमेंट, जहाँ पर जॉइन कॉलम में ओनर एंटिटी, वन टू मैनी यूज किया। तो अभी एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम बन जाएगा किस नाम का? ठीक है, वन टू मैनी फॉरेन के कहाँ आता है? वन टू मैनी में अगर डिपार्टमेंट एक है और एम्प्लॉय एक है, तो वन टू मैनी में वन का प्राइमरी की, मैनी का फॉरेन के बनता है ना। तो डी नंबर, डी नेम और सिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या है? पीके। ये क्या है? पीके। और फॉरेन की कौन बनता है? यहाँ आता है ना, वन का जो प्राइमरी की है वो मेनी में क्या बनता है? फॉरेन की बनता है। तो फॉरेन की कहाँ बनाना है अपने को? एम्प्लॉय में। नॉन, तो इसके लिए फिर ज्वाइन कॉलम का लिखेंगे? डिपार्टमेंट में। और जो फॉरेन की बनेगा उसका नाम क्या होगा? और वो इस टेबल के कौन से कॉलम को रेफर कर रहा है? अगर मैं यहाँ कर दूं माई डी एन ओ, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो फॉरेन के बनेगा किस नाम से बनेगा? माई डी एन ओ नाम से बनेगा। समझ में आ रहा है? बस, बाकी सब सेव करते हैं। ओके, अब इसके सारे बनाने पड़ेंगे सारे। कंट्रोलर बनाओ, न्यू क्लास, क्या?
DPT कंट्रोलर, हमने स्टेट कंट्रोलर बनाया था, वो सब चीज़ें मैं यहाँ ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चेंजेस कर देंगे। @ टेस्ट कंट्रोलर, फिर क्या बनाएंगे, क्लास क्या नाम की, DPT सर्विस, और जो स्टेट सर्विस में डाला था ऊपर डाल देंगे इसके अंदर भी, और नोट कर देंगे इसको ऐड सर्विस। और फिर रिपोजिटरी में जाके क्या बना देंगे, न्यू इंटरफेस, क्या DPT रिपोजिटरी, और क्या करेंगे उसको, कौन से के लिए, DPT के लिए, Ctrl+Shift+O कर लो, DPT भी आ गया, @ रिपोजिटरी भी आ गया। अब आते हैं, स्टेट हो गया ना, तो DPT कंट्रोलर से आते हैं, किसका बनाएंगे, DPT इंपोर्ट कर लो, ऐड DPT इंपोर्ट कर लो, ऐड DPT, और है क्या ये, क्रिएट कर लो। क्या चाहिए इधर, DPT रिपोजिटरी, Ctrl+Shift+O इंपोर्ट कर लो, और DPT रिपोजिटरी से सेव कर लो किसको, क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट सर्विस में ना, क्या बोल रहा है, DPT रिपोजिटरी सेव डिपार्टमेंट, ये क्या देगा मुझे, डिपार्टमेंट देगा ना, सही है, यस और नो। अभी कंट्रोलर के बॉम्ब मार रहा हूँ, व्हाट विल इट रिटर्न, DPT, सही है। अब जाके इसको पोस्ट करो, ऐड अ रिक्वेस्ट बाय व्हाट नेम, ऐड DPT पोस्ट मैपिंग, ऐड DPT रॉ जेसन, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा किसका, DPT का। तो DPT का ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, तो ऑटो इंक्लूड होगा, डी नेम है, IT, और सिटी है पुणे, और फिर क्या है नेक्स्ट, DPT वर्कर्स, क्या है, DPT वर्कर्स क्या देंगे, वन डिपार्टमेंट विल हैव many employees, so DPT workers will be a list of employees, will be a list of employees, right? तो लेट्स से इसमें 3 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, 3 नंबर तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो क्या दूंगा मैं, नेम दे दूंगा सिर्फ, ई नेम,
कोलन एलिस और सैलरी कोलन 800, है ना। अब ये कॉपी करो और ये पेस्ट करो, ये कॉपी करो और ये पेस्ट करो। बेन क्या है 900 और क्रिस क्या है 1000, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ये पेलोड कैसे किया, क्योंकि वन डिपार्टमेंट हैज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। लेट्स डू अ सेंड। तो डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया, आईडी 1 मिल गया आईटी को, और एलिस को 1 मिल गया, बेन को 2 मिल गया, क्रिस को 3 मिल गया, राइट। So if we come here and check, there has been modification in the database. Two tables have been added. So if I go to the department table, it shows me, and it shows me the employees also. ठीक है, सब 111 में है। If I go and delete a department, so I go to department controller. Yes, it will delete. I do a @delete mapping, and I do delete department, and I pass the D number as a path variable. So what do I need now? I need a method by the name delete department. It will take a path variable as a integer dno, and will call this method of my and pass dno, and once it does, it will say record deleted successfully. What will be return? Record deleted. Okay, deleted, and we are returning a string, so we will say return type is string. सही है। Now is this method there in the service? Create it. What will it do? Just call the dbt repository dot delete by id and dno, सही है। और कंट्रोलर में मैंने उसको डिलीट मैपिंग दे दिया है। यहाँ आते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट है, और क्या बोला है, डिलीट डिपार्टमेंट, और 1 पास कर दिया, ठीक है। तो सेव कर दो और यहाँ सेंड किया, रिकॉर्ड क्या आया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखो डिपार्टमेंट है क्या, आईटी नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे जो आईटी में थे। तो ये क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। आ गया समझ में, 1 to 1, 1 to many। अब मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक थर्ड टेबल होती है, क्या होती है, और उस थर्ड टेबल में दोनों के प्राइमरी के रेफरेंस होते हैं ना। तो लेट्स से ये देखो मैंने मैनी टू मैनी, तो देखो इन 1 to many रिलेशनशिप द फॉरेन की इज क्रिएटेड इन द नॉन ओनर, ठीक है ना, समझ में आएगा डिफरेंस। तो ये तुम्हारा पेलोड था। अब आते हैं मैनी टू मैनी में, ठीक है। तो मैनी टू मैनी में क्या था, जो हमारा 1 to many ही था ना, ये लाइब्रेरी बुक्स भी एक एग्जांपल था 1 to many का ही, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक तीसरी, एक एग्जांपल था मैनी टू मैनी का, ठीक है। ये सब मैनी टू मैनी, 1 to many के एग्जांपल थे। 1 to many का एग्जांपल ये था, और ये भी 1 to many ही है, ओके। मैनी टू मैनी में
जो एंटिटी जहां पे आपको बनाना है, अभी एक्टर मूवी में क्या होता है ना? तो एक्टर और मूवी, तो कैसे होता है इसके अंदर? एक्टर और मूवी, वन मूवी कैन हैव मेनी एक्टर्स एंड दोनों तरफ से वन टू मेनी पॉसिबल है ना? वन मूवी कैन हैव मेनी एक्टर्स and one actor can work in many movies. So if I have over here actor number, actor name and actor की age, और movie number, movie name and release year. So if I do many to many, what happens is it makes a third table. So I can give any name to that third table. Let's say I give third table name as Bollywood, and it will reference both the foreign keys. So foreign key of actor number and foreign key of movie number, right? So here you can make any entity as the owner entity, and that will give a at the rate join table. Will give a any entity. Actor also can give, movie also can give. Let's say I give actor, and in here I have to specify the name of the third table and the foreign keys. Okay, got it? So let's go and create. So let's go to the entity, new class, actor. Okay, so what do I give for actor? Private integer actor number, private string actor name, and private int age. Okay, and I go and make a new class movie, and I'll have what over here? Private integer movie number, private string movie name, and private int which year the movie released, right? So now let's give the basic things which we give. So let's make the primary keys. So actor, this is my primary key, and in movie, this is my primary key. Make them as valid entities also. So my actor has now become a valid entity, and my movie also has now become a valid entity. Now choose any one as your owner entity. Let's choose actor now. So what will actor have? List of movies. Actor will have list of movie, right? That we will call as his portfolio. Actors portfolio, right? Control Shift O, list from util. And now what will the actor give over here? At the rate many to many. Okay, and whatever we have to give, what would we give over here? Cascade type, all, and fetch type, eager. Okay, and then here you have to give at the rate join table. Okay, and now here you have to mention the other details. So let me just pick that up from an existing. Okay, I have made it. So actor. So see, at the rate join like this, you have to just copy this code and put it into your actor. Join table, what is the third column table name? Bollywood. Join column means the foreign key of the owner entity. What will that become? Foreign key of the owner entity. What is the owner entity primary key?
So that foreign key will become in the Bollywood table FNO. And inverse join column is the non-owner foreign key. What will that become? FNO. That's it. Don't do anything in the non-owner entity. No-owner entity, nothing to do. So now what, if I run, what do you think should happen in the background? If I do a refresh, what do you think might have happened? Three tables might have created. See, you got it over here. This is our database, ITP S1DB, actor having three columns, actor number, age, a name, movie having three, movie number, movie name, and then Bollywood also has been made with the foreign keys of both FANO and MANO. Making sense? So now if you make a entity for actor, now we have an entity for actor, right? So now let's make a new class for actor controller. It is @rest controller, make a service new class actor service, and make a repository new interface actor repository. Okay, annotate it with add repository extends for actor and integer. Control Shift O. Import the actor repository is done. Let's come from the now actor controller. What do you want to do? Auto wired the okay actor service, actor service. Control Shift O. Now with this actor service, I will return an actor, add actor, pass the actor as an argument. Control Shift O, add actor, actor service dot, and pass what other parameter? Actor is this from there. Created. What will this do? This will need the actor service. इसका not ने क्या क्या? Actor repository चाहिए. Actor repository और क्या बोल देंगे? रिटर्न कर देंगे actor repository dot save. सेव कर देंगे किसको? एक्टर को, इसको ऑटो वायर कर लेंगे. Okay, makes sense. Good. So now let's go and hit the which method? Add actor. So go to Postman and say add request. It's a post request. Add actor
actor. The body, I'll have to pass raw JSON. So here, what will I pass now? Actor details. So I'll have to pass the actor details such as a name and age, a name, SRK, and age 57. And then here I have to pass his portfolio. I need to pass his, what will be the portfolio? List of objects, because it is a many to, right? कॉमन ही दिया क्या है? ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या होगी? उसकी मूवी लिस्ट ना। तो उसकी मूवी लिस्ट में से क्या क्या देना है अपने को? एम नेम और जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। जवान, विच ईयर? आर ईयर ऑफ 202। गिव मी रावण। हाउ डू स्पेल रावण? रावण कब है? 2010 कर दे। एंड चेन्नई एक्सप्रेस 2007 कर दे। ठीक है, लेट्स डू अ सेंड। शाहरुख खान को ID 1 मिल गया। ठीक है, तो देखो, एक्टर टेबल में एक्टर के रिकॉर्ड चले गए, मूवी टेबल में मूवी के रिकॉर्ड चले गए, और बॉलीवुड में कौन सा एक्टर कौन सी मूवी कर रहा है उसके रिकॉर्ड चले गए। ठीक है, तो अगर मैं अभी एक और पोस्ट करता हूँ, दीपिका पादुकोण, ठीक है, या जैसे आप एक्टर पुश करते जाएंगे वैसा वो पोस्ट होते जाएगा। ओके, ऑल गुड।